Hi kids, welcome to your English class and I'm your teacher and mentor Ananya and I'm back with a new lesson of your book that is English Grammar for Class 6 by Coral Publishers. Children, today we are going to begin with lesson number 11 adverbs. Okay, so आज हम adverbs के बारे में पढ़ेंगे. Let's get started. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverbs जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी verb को, किसी adjective को या फिर खुद किसी और दूसरे adverb को modify करते हैं या उसके meaning में कुछ further add करते हैं यानी meaning को बेहतर बनाते हैं. Read the sentences given below clearly. Simran speaks loudly. ये स्पीक कैसे बोलती है सिमरन? लाउडली, जोर से, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है. द वेदर इज फेयरली वार्म, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं. इसी तरह से शी डांसेस वेरी ग्रेसफुली. ग्रेसफुली जो अपने आप में एक एडवर्ब है, वेरी ऐड करने पे हमने उसे और ज्यादा बेटर कर दिया. वो बहुत अच्छे से डांस करती है. ऑलराइट, सो हमें हमेशा याद रखना है कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और इसी तरह किसी ना किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. एडवर्ब्स के भी काइंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर एंड अगर हम पढ़ने बैठे तो देयर आर 6 मेजर टाइप ऑफ एडवर्ब्स. What are these? These are adverbs of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency or number, adverb of quantity or degree and interrogative adverb. ठीक है, तो हम इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि हम इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें. आप सभी ने इन सब एडवर्ब्स में से कुछ ना कुछ एडवर्ब्स अपनी पिछली क्लासेस में जरूर पढ़े होंगे. So let's get started. Adverbs of manner express the way of manner in which an action is done. They answer the question how. यानी adverb of manner वो adverbs होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम या कोई action किस तरीके से हो रहा है, how it is done. For example, the man shouted angrily. Shouted is the verb, चिल्लाना verb है. Angrily किस तरीके से? गुस्से से. So angrily is the adverb of manner. The boy runs quickly. लड़का भाग रहा है. कैसे भाग रहा है? जल्दी जल्दी, तेज तेज. So quickly is the adverb of manner. ठीक है? The patient slept soundly. Always remember adverb of manner में हमेशा end में ly use होता है. कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर्स ऐसे हैं जिनमें एलवाई नहीं लगता. जैसे बैड का जब हम बैड एडवर्ब ऑफ मैनर बनाए तो बैडली बन गया, ग्रेट का ग्रेटली बन गया, फेयर का फेयरली बन गया. लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर है जिनमें एलवाई नहीं लगता, जैसे वेल, हार्ड, इन सब में जो है एलवाई नहीं लगता. हम कभी भी नहीं बोलते वेलली, हार्डली. ओके, दीज आर नॉट द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट adverb of place. Okay, adverb of place tells us where things happen or where an action is performed. They answer the question where. यानी adverb of place हमें किसी जगह का बोध कराते हैं, कौन सी जगह पे वो action हुआ है, यानी they answer the question where. The boy is sitting outside. लड़का बाहर बैठा है. बैठा है, कहाँ बैठा है? बाहर, outside. So outside is adverb of place. I have to go far. मुझे दूर जाना है, मैं दूर तक जाऊंगा. Okay, so कहाँ जा रहा हूँ? दूर जा रहा हूँ. So place क्या है? Far. All the students are downstairs. सब लोग कहाँ हैं? नीचे हैं. So that's where downstairs is adverb of place. Here is a list of common adverb of places. Up, outdoors, down, here, outside, in, near, nowhere, everywhere, upstairs. ये सभी कॉमन एडवर्ब्स हैं. ठीक है, इन सभी को हम जब पढ़ते हैं तो ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि
कब हुआ है, किस वक्त, which time. It tells us the time, that is today, yesterday, tomorrow, daily, lately, ago. When someone does something or when some action is performed. तो इसका मतलब है ये हमें when क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यानी कब, कोई काम कब हुआ है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें when लिखना है। They answer the question when, यानी कब। ओके, फॉर एग्जाम्पल we shall go tomorrow, हम जाएंगे, कब जाएंगे, कल जाएंगे, tomorrow. So this is adverb of time. The train will arrive soon, ट्रेन जो है जल्द ही आएगी, ट्रेन आएगी, कब आएगी, soon. So soon is adverb of time. The salesman came late, salesman आया लेकिन कब आया, देर से आया, so late is adverb of time. यहाँ इस बॉक्स में कुछ कॉमन एडवर्ब ऑफ टाइम दिए हैं, लाइक बिफोर, yesterday, never, formerly, today, daily, tomorrow, early, now, soon, late, already, ago. So these are some common adverb of time जो हम sentences में use करते हैं. Now next we have adverb of frequency or number. यानी कि ये एडवर्ब हमें बताता है कि कोई एक्शन कितनी बार, how many times does a action takes place, यानी कितनी बार, how often कोई चीज हमने करी है, ठीक है। The milkman comes to our home daily, milkman जो है रोज हमारे घर दूध देने के लिए आता है। So daily means the action is repeated on regular basis, so daily is the adverb of frequency. The bus was nearly overcrowded, bus almost या nearly overcrowded थी, जगह ही नहीं थी बस में। She is always late for the school, हमेशा ही लेट होती है। So this is adverb of frequency. Let's now move further. यहाँ again येलो बॉक्स में कुछ adverb of frequencies दिए हुए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इन्हें हम जब सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आप इजीली इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Next we have adverb of quantity or degree. Adverb of quantity and degree हमें बताता है कि कोई एक्शन कितना या फिर कितना ज्यादा किया गया है या कम किया गया है, to what extent, how much या फिर to what extent. For example, the old man seems very tired, बहुत tired हूँ। I am very hungry, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन is too careless, रोहन बहुत ज्यादा केयरलेस है, ठीक है। रोहन जो है वो बहुत ज्यादा केयरलेस है। I am extremely sorry, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, I am so sorry, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी को यूज करते हैं, ओके। Some common adverbs of degree are almost, quite, as, so, enough, nearly, to, more, most, entirely, completely, hardly, very, slightly, fairly, all these, ठीक है। आगे बढ़े, let's move further. Now certain adverbs are used to form questions also. They are used for asking questions and thus they are known as interrogative adverbs, like where is the thief hiding, कहाँ छुपा हुआ है। Why is she crying, why, वो क्यों रो रही है, तो where, why जो है हमारे interrogative adverbs है। और भी interrogative adverbs हैं, आप जैसे जैसे sentences करेंगे वैसे वैसे आपको practice होता जाएगा। Alright children, so let's start exercise number A. Fill in the blanks with adverbs. Here are certain words given in the bracket and we have to form adverbs and then do the fill in the blanks. So let's get started. I have arranged all the books quickly. Alright, quick will become quickly. We will add ly. Puneet could solve all the sums easily. बहुत आसानी से. So easily. Right? Next, the tiger roared fiercely. इसी तरह please finish your homework neatly. The sun shines brightly.
So you have to add ly and then frame the adverbs and complete this exercise. The first two I have done for you. In the remaining three, you will again add ly, create the adverbs and fill the blanks appropriately. So let's move to the next question. Exercise number B. Underline the correct adverb of time to form options provided to complete each sentence. The first has been done for you. I hope to see my cousins early soon. मैं अपने cousins को जल्दी देखना चाहता हूँ. I hope to see my cousins soon. Okay? So let's start. I hope to see my cousins soon. So soon will be the correct option. Alright. Second, please come home immediately or urgently. घर अभी वापस आ जाओ. So please come home immediately. Okay. Third one, what are the children doing today or tomorrow? So what are the children doing today? Okay. Next, fourth one, our team hasn't won any matches currently or recently. So any matches recently. Fifth, they have just now announced the result. They have just announced the result. Okay. So just is the correct option. Clear? So in this way you have to choose the correct option and write the sentences. Now let's do the exercise C. Rewrite each of the following sentences inserting the adverb given in the brackets at the correct place. हमें जो adverbs दिए हुए हैं brackets में इन्हें sentence के correct यानी proper place पर add करना है और फिर पूरा sentence दोबारा लिखना है. So let's get started. My father goes to the park often. My father often goes to the park. He avoids going out at night. He rarely avoids going out at night. Okay. She travels by public transport. She seldom travels by public transport. Anju goes to bed late. Anju always goes to bed late. Sunil would come home late. Sunil would come home late rarely. Yeah, Sunil would rarely come home late. Sunil would rarely come home late. All right. So in this way, you have to add the adverbs at the correct places and then rewrite these sentences. So first two already are done for you and remaining three we have already discussed. So I'm sure children that you would be able to do them in a very easy way. Now let's move further. So children, let's now do exercise number D. Exercise number D says complete the sentences by using words or phrases in the brackets in the right order. The first one they have done. Amrita spoke at the debate last night well. So Amrita spoke well at the debate last night. In this way, we have to rearrange these phrases and then complete the sentence. Second one, I met an old school friend last night in a restaurant after many years. I met an old school friend in a restaurant last night after many years. Alright. The cadets go on a 10-kilometer hike daily early in the morning. So the cadets go a 10-kilometer hike early in the morning daily. Okay? We are going for a fortnight to Kashmir next week. We are going to Kashmir next week for a fortnight. Okay? The children played in the park noisily all the day. The children played noisily in the park all day. Clear? So in this way you have to rearrange these sentences. आपको इन sentences को rearrange करना है जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ discuss किया है. बिल्कुल उसी तरह से आप इन sentences को rearrange करेंगे और फिर इसको करेंगे. So children, now we are done with the exercises of this particular chapter. I hope that you have understood the different concepts of adverbs clearly. आपको adverbs के सारे types अच्छे से समझ में आए होंगे और अब आप easily adverbs को recognize भी कर सकते हैं, adverbs frame भी कर सकते हैं और उन्हें sentence में properly use भी कर सकते हैं. So with this, we end today's session. I am going to meet you very soon with a new chapter where we will learn something more interesting and we will try to enhance our language skills.
So till then, take care and bye bye. Have a wonderful day ahead.